लेकिन आपको बता दें कि नतीजों का सीजन फुल स्विंग में है और इसी कड़ी में जून तिमाही में पीएनबी गिल्ड्स को 89 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मार्जिन पर नजर डालें, प्रेशर यहां भी साफ देखने को मिला है। नतीजों पर इस तरह का प्रेशर कहां से आया है, क्यों आया है, क्या हाइलाइट्स रहे हैं इस क्वार्टर के नंबर्स के, आगे किस प्रकार की ग्रोथ बनती दिख रही है, सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ विकास गोयल साहब जुड़ चुके हैं। मिस्टर गोयल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सर, सबसे पहले तो हम नंबर्स के बारे में ही बात करेंगे। लॉस का कारण क्या रहा है सर? मैं दो तिमाहियों को दोनों साल की मतलब वाई अगर तिमाहियों की नेट लॉसेस पर नजर डालूं ऑन सिक्योरिटीज, पिछले साल इसी तिमाही में 35 करोड़ के लॉस और इस बार ये बढ़कर 200 करोड़ के आसपास चला गया है। क्यों हुआ है सर, जरा बताइए। नेहा जी, आपको पता ही है रिजर्व बैंक चेंज स्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी बिकॉज इन्फ्लेशन it changes stance from supporting growth to controlling inflation। 3 इवेंट हुए लास्ट क्वार्टर में। पहला इवेंट अप्रैल में जब रिजर्व बैंक इंट्रोड्यूस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एज अ रिजल्ट रेट वेंट अप बाय 40 basis points from 335 to 375। Then in May, off cycle 40 basis points hike in the repo rate, so repo rate went from 4% to 440, and then in June again in the meeting it hiked rates by 50 basis points to the current 490। उसका रिजल्ट ये था कि ओवरनाइट रेट्स जो 335 पे थे वो 485 पे आ गए। इन द सेंस इफेक्टिवली देयर वाज अ हाइक इन रेट्स ऑफ 150 बेसिस पॉइंट्स। आप जानती ही हैं कि जब रेट्स ऊपर जाते हैं तो द बॉन्ड्स इन विच वी ट्रेड उनकी प्राइसेस फॉल करती है। सो द रीजन फॉर दिस 200 करोड़ इज this front loading of monetary policy action by Reserve Bank of India। So that is essentially why we have a 200 crores। Most of it is in the unrealized category। So if things improve going forward, then we will recover it back। ओके गोयल सर, ये तो आपने समझा दिया। मुझे बताइए कि अब हम देखने वाले हैं कि आज देर शाम फेड की जो मीट है वो खत्म होगी और वहां पर वो रेट हाइक का ऐलान करेंगे। 75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक की संभावनाएं हैं। आरबीआई की जो पॉलिसी मीट है अगले महीने है। मार्केट इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहा है रेपो रेट हाइक देखने को मिलेगी। सर, मैं आपसे जानना चाह रही थी किस तरह के रेट हाइक की आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं और फिर बिजनेस पर कैसा असर पड़ेगा? जी, मार्केट का जो कंसेंसस है जो जिसको कहते हैं टर्मिनल रेट, बेसिकली जो अभी 490 पे है रिपो रेट, मार्केट कंसेंसस इज अबाउट 6%। आई थिंक गिवन गोइंग फॉरवर्ड, गिवन दैट जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यूक्रेन रशिया war is going to the background, it is waning, the effect of it, the risk of it is waning। ऑयल का जो मोमेंटम, ऑयल प्राइसेस का मोमेंटम ऊपर था वो भी थोड़ा खत्म हो गया है। ऑयल प्राइसेस लुक लाइक स्टेबलाइजिंग एट समवेयर बिलो 105 with a tendency to maybe go lower। Globally, concerns are now going from inflation to recession because there is US bond markets are already pricing in almost certain recession in United States। So obviously this will also have an effect on growth in India, and you can see that most of the forecasters are dialing down the growth numbers on India। The latest number today, you saw IMF come down substantially on the growth numbers। So Reserve Bank also most probably will be much more moderate than what the market was expecting, given that the pressure on inflation coming through primarily oil prices will now be slightly subdued। So मेरी feeling ये है going forward Reserve Bank will hike but not as much as the market priced into the bond prices or yields। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि झटका लगेगा लेकिन थोड़ा धीरे से लगेगा। ठीक है सर, मुझे बताएंगे कि करंट बोरोइंग रेट एंड यील्ड्स किस प्रकार की हैं गोइंग फॉरवर्ड? मतलब अगर हम इस वित्त वर्ष की बात करें, पूरे वित्त वर्ष की बात करें, तो यील्ड्स किस दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ से? So as I said, Neha, that
already, market yields have already priced in a certain amount of action by Reserve Bank. Now, going forward, if the action is less than what the market has priced in, then yields will start coming down. That has already started happening. Peak, say, if you saw, say, let's take the 10 साल की जो हमारी security है, benchmark security है, that peaked at 762. Currently, it is at 735, 36, thereabouts. So already yields have started coming down. मेरे विचार में, in at least my thinking, we have already seen the peak of yields. We are not going to see yields go higher from here. In fact, the probability of yields coming down lower is much more possible. And that is good news for our business going forward. So I'm hopeful that the worst is behind us in terms of in Q1 and Q2 onwards. The results will be much more, will be more normal, let us put it that. यही उम्मीद करते हैं सर। एक आखिरी सवाल, ट्रेजरी डिमांड गोइंग फॉरवर्ड, इस पर आपका क्या विचार है सर? That is a concern that the overall supply of government securities is a concern. So up till now, जो auctions हुई हैं, they have been received well. But there is one weapon in the armory of Reserve Bank, which is held to maturity, जो banks के लिए होता है classification of securities, उसको enhance करना और उसको lengthen करना in terms of availability. That is something which is available. In the background also, the other thing which is available, which may happen is, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, global index में inclusion. If that happens, then this supply can be absorbed. But having said that, already I think the absolute supply was priced in by the market. So the offsetting factor of geopolitical risk waning, oil prices waning, will have a much higher impact than the supply itself. So overall, supply to hai, but this is a known number, and as of now, it looks like they are not going to overshoot the number. By they, I mean the government of India. So overall, I think, Neha, that yields now have peaked and they are looking to come down as we go along in the year. गोयल सर, थैंक यू सो मच। आपने समय निकाला, जी बिजनेस से बात की, न सिर्फ नतीजों पर हाइलाइट्स दिया, बल्कि आगे भी क्या उम्मीद करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ यील्ड्स, इन टर्म्स ऑफ रेट हाइक्स, ये भी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने